Okay, so the question here is water is expected to have a lower boiling point than hydrogen sulfide, but it actually has a higher boiling point now. Uh, Comment on this statement by referring to the intermolecular forces in both these substances. A detailed description of how the intermolecular forces arise is not required. Basically, this question is about the basics of intermolecular forces now. Okay. First, we have to describe why H2S is expected to have a higher boiling point than H2O. First, uh, as H2S is having uh, as- sorry, as H2O is having is H2 is as H2O is having fewer leather electrons than H2S. So it is expected. So water is expected to having less induced dipole or less या weaker induced dipole. So can we say it would have a weaker permanent dipole? No, not weaker permanent dipole. Na permanent dipole is a different thing. Na the size, the force that depends on size is induced dipole. Permanent dipole is inversely proportional to the size. Smaller the size, greater will be the permanent dipole. It is only induced dipole, or we can say that van So der induced Waals force. dipole matters on the size. Yes, it is directly proportional to the size. If the size is greater, induced dipole will be greater, because if we have a greater size, we will have a greater number of electrons now. Okay? It is due And to the smaller the size, the higher charge density, so more permanent dipole. yes, yes. Okay, so water is expected to having less weaker induced dipole, but as H2O is having hydrogen bonding, yes, H2 is having hydrogen bonding, but as H2 is having, which is stronger than induced dipole, and needs a lot of energy to overcome it. So yeah, as a result of it, H2O is having higher boiling point than H2S. Okay. This is for 1 mark. This is for 1 mark. This is for 1 mark, and this is for 1 mark. So that's why the question is for 4 marks. Okay. Okay, sir. This question is about the compounds of group 5 elements. Nitrogen trichloride NCl3 has a boiling temperature of 344 Kelvin, and then nitrogen trifluoride NF3 has a boiling point of 144 Kelvin. Explain this difference in the boiling temperatures by referring to the all of the intermolecular forces that are present. It is for 5 marks, so we have to describe it quite briefly ना. हमने इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है because it is for 5 marks. ठीक है. Okay, sir. Sir,
Fluorine is below fluorine in the periodic table of group 7. This means that chlorine has more electrons and thus will be larger. So it will have a larger induced dipole. Yes. Because yes. So we have to write in a sense that chlorine has more electrons. Chlorine has more electron than fluorine. So it will have greater induced dipole. मैं खाली हाईडी हाईडी लिख रहा हूँ. Greater induced dipole than fluorine. सही है? And it also mentioned that by referring to all the intermolecular forces that are present now, so we have to mention all the intermolecular forces. ठीक है? But and but permanent dipole, but not but हम ऐसे लिखते हैं ना. Permanent dipole is stronger in NF3 than in NCl3 because uh, fluorine is having a greater electronegativity than chlorine. Also, fluorine is having a lesser size, smaller size than chlorine. So that's why permanent dipole in fluorine is greater. Okay, because NF3 has a greater difference in electronegativities. yes, because fluorine. They will give us Pauling table in the test. No, because fluorine is more electronegative than chlorine. सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड. अच्छा, यहाँ पे आप दो तरह से लिख सकते हो ना. जो आखिरी आपने कंक्लूजन लिखना है, तो आप दो तरह से वो लिख सकते हो. आप ये भी लिख सकते हो. सो इंड्यूस्ड डायपोल इज सो इंड्यूस्ड डायपोल क्या करता है? हमेशा डोमिनेट करता है परमानेंट डायपोल को. सो इंड्यूस्ड डायपोल इज डोमिनेटिंग परमानेंट डायपोल. I don't know this. So NCl3 is having greater boiling point. और आप खाली ये भी लिख सकते हो. सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड. ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट को लिखवाया. अगर ये समझ आ जाएगा, नहीं है तो इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे वो लिख सकते हो कि सो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन NCl3 देन NF3. सो मोर energy, or we can say that heat is required to break intermolecular forces in NCl3 than in NF3. अच्छा देखो, यहाँ पे एक वो क्वेश्चन ये वो क्रिएट होता है कि सर व्हाई इज इंड्यूस्ड डायपोल इज डोमिनेटिंग परमानेंट पर डायपोल. देखो, इंड्यूस्ड डायपोल डिपेंड करता है ऑन द नंबर्स ना, और परमानेंट पर डायपोल डिपेंड करता है ऑन दी स्ट्रेंथ. इंड्यूस्ड डायपोल बहुत ज्यादा नंबर से क्रिएट होते हैं, वेयर एज जो परमानेंट डायपोल है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है ना. तो इंड्यूस्ड डायपोल इतने ज्यादा ये हॉल दो कि इंड्यूस्ड डायपोल बहुत वीकर फोर्स है परमानेंट डायपोल से, लेकिन क्या होता है वो इतने ज्यादा अमाउंट में बनते हैं कि वो जो उनकी कलेक्टिव वो होती है ना फोर्स, वो परमानेंट डायपोल को ओवरकम को कर लेती है. ठीक है, तो इंड्यूस्ड डायपोल डिपेंड करता है नंबर्स पे, बट जो परमानेंट डायपोल है वो डिपेंड करता है साइज पे. ठीक है, तो क्योंकि इंड्यूस्ड डायपोल बहुत ज्यादा नंबर्स में बन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं परमानेंट डायपोल को. सही. Understood, sir.
अच्छा देखो, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द हेलोजन. This question is about the halogens and redox reactions. The boiling temperatures of the three halogens are shown in the table. Explain why the boiling temperature increasing from chlorine to iodine. अच्छा देखो, chlorine, bromine, iodine, all of them are in a group 7. They are from halogen. But chlorine is having three shells, bromine is having four shells, and iodine is having five shells. So iodine is having greater induced dipole than bromine and chlorine are. So that's why iodine is having a greater boiling point than chlorine and bromine. And the reason of having a greater induced dipole is as iodine is having five shells ना, पांच shells है ना, तो नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आयोडीन में ज्यादा होंगे. ठीक है, नंबर ये शेल ज्यादा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आयोडीन में बहुत ज्यादा होंगे. सही. From chlorine to iodine, number of shells increases. So does e- so do electrons. ठीक है. So induced dipole will also increase from chlorine to iodine due to greater number of electron. ठीक है. Can we say the atoms get bigger? Yes, you can, but you have to mention the electrons. Electrons basically induced dipole depends on the number of electrons. The basic concept of induced dipole is based on the number of electrons. सही है. तो अगर आप साइज मेंशन कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही को मेंशन करने हैं इसे. अच्छा देखो, the compounds hydrogen fluoride HF, water and methane all are simple molecular structures. That means they are covalent. They are forming covalent bond, but all of them are having simple molecular structure, not macromolecule. Covalent molecule have two types now. The one is macromolecule and another one is simple molecular structure. Macromolecules का फॉलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, बट दे हैव अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग टेम्परेचर्स ना. ये क्या है, दिस इज HF, दिस इज वाटर H2 एंड दिस इज मीथेन CH4. तो ये बोल रहा है कि दे हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट ना, बहुत फर्क है इनके तो बॉइलिंग पॉइंट में. क्लोरीन का है बहुत ही कम है, -161.5. H2 is having 100 ना, ये हम सबको पता है. HF is having a boiling point of 19.5. Discuss the reason of the differences in their boiling temperatures of the three compound using the data in the table and the boiling electronegativities value in the data booklet. ठीक है, तो आपने ये को देखना है जो ये बॉइलिंग स्केल है. ठीक है, आपने उसको को मेंशन करना है. ठीक है. अच्छा देखो, अभी आपने किस तरीके से करना है उसके ऊपर आते हैं. अच्छा देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है. अच्छा देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे वो देखो क्या है. अच्छा देखो, ये ना 6 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो आपने प्रॉपरली ना उसको डिजाइन करना है ना, एकदम से नीचे को चलना है आपने ना. अगर आप एकदम से वो चलोगे तो आपके पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास वो लिखने के लिए कुछ नहीं होगा. फिर जो पॉइंट आपने वो लिखा हुआ है आप उसी को ही जो है वो एक्स्ट्रा कर रहे होगे ना, वो लंबा कर रहे होगे उस पॉइंट को. देखो,
सबसे पहले जहाँ पे आपने आना है ना, वो आना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। देखो सॉरी, इंड्यूस फॉर डायपोल पे ना। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले वो देखो, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन में 9 होता है, तो दे हैव टोटल नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन ना। ठीक है, H2 में 2 हैं, ऑक्सीजन में 8 हैं, तो यहाँ पे भी कितने होते हैं, पर 10 है। कार्बन में 6 होते हैं और ये 4। तो सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, सेम है। सही है। तो सबसे पहले आपने क्या आपको बताना है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन जो वैन डेर वाल फोर्स है वो, या डिस्पर्जन फोर्स या इंड्यूस्ड डायपोल, वो इक्वल होंगी, एज ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम electrons 10, so they will have, so they have same induced dipole। ठीक है, IDID force। ठीक है, that is for IDID force ना। and for second mark you have to define। अच्छा अब देखो यहाँ पे, वही वही पॉइंट जो अभी आपने एक्सप्लेन किया था ना, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो या लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in fluorine। There is a large difference of electron negativity between electron negativity in H2O and HF, but very small in CH4। ठीक है, CH4 में वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत तो कम है, सो CH4 is only having, ये थर्ड पॉइंट है, is only having IDID force। सही है? तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, CH4 का हमने क्लियर कर दिया कि भाई CH4 इज हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब हम आएंगे HF और CH4 पे। ठीक है, both H2O and HF, both H2 and HF are having hydrogen bonding HB and permanent dipole due to crater dipole। ठीक है, वो हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा था। ठीक है, बट वाई इज H2O is having a greater force than HF, because H2O is forming two hydrogen bond ना। H2O के पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ना, बिकॉज सॉरी, क्रेटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर हैं। ठीक है, वेयर इज ये HF में क्या होता है, उसके पास ये कम होते हैं। ठीक है, और HF में वो एक ही बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाता है। ठीक है, तो क्या है, HF में मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, और सॉरी, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, और HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम है। ठीक है, उसका देखो रीजन भी है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे पे लिख देंगे, H2O इज हैविंग ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, so it will need a lot of energy to overcome intermolecular forces in H2O than in HF। सही, तो ये हमने पूरा जो है वो डिफाइन कर दिया। फर्स्ट हमने क्या किया है, देखो ये 6 मार्क का है ना, तो आपको उसी हिसाब से करना है, आपने एकदम से लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है, 6 मार्क्स तो कम नहीं होते हैं। ठीक है,
देखो सबसे पहले क्या है, यू हैव टू डिफाइन के देखो जो भी फोर्सेस हैं आपने सबको वन बाय वन डिफाइन करना है. फर्स्ट यू हैव टू define the IDID forces as all of them are having 10 electrons each now, so they have same IDID forces now. But the difference of electronegativity in H2 and HF is greater than the electronegativity in CH4. CH4 is having a very small difference in electronegativity now, so CH4 is only having IDID forces. That is your second and third point. And for your fourth point, you have to compare for remaining 3 point, you have to compare H2F and HF. Why H2 is having a greater boiling point ना. फिर हमने यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है, both H2 and HF are having hydrogen bonding and permanent dipole, but H2 is having greater hydrogen bonding than HF. ठीक है. So this is your 4 and 5 point, but for the 6 point you have to mention कि जब जाहिर सी बात है, if H2 is having a greater hydrogen bonding ना, so it will need greater energy to overcome the forces in H2O than in HF. सही, इस तरीके से. So can we say for every molecule of H2O, there's two hydrogen bonds, whereas in HF there will only be one hydrogen bond? Yes, you can. सही. अच्छा, मैंने ये ग्रेटर इसलिए लिखा है ताकि अगर आप में कुछ ये गलती हो जाए ना, तो अगर आप एग्जैक्ट नंबर कोट ना कर पाओ, तो ये उसको पता चल जाए कि हाँ भाई ये ग्रेटर है, स्टूडेंट को पता है. ठीक है. तो मैं वो नॉर्मली जो एग्जैक्ट नंबर्स होता है ना, मैं इनको अवॉइड को करता हूँ. अगर ये आपने गलत लिख दिया ना, तो वो मार्क्स कट कर देगा, लेकिन अगर आप ये क्रिएटिव को लिखोगे तो मार्क्स कट नहीं करेगा. अच्छा देखो, फिर इसके बाद क्वेश्चन है. This is a question about the halogen alkane and related compounds. Explain why ethene has a boiling point of -104, whereas a ethanol is having a boiling point of 78. देखो बहुत ही जो है वही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क का ना. ठीक है. देखो दोनों की फोर्सेस, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द फोर्सेस ऑफ बोथ ना. ठीक है. इन इथीन बेसिकली वी हैव induced dipole as their only force na. But in ethanol is CH3 CH2OH na, as it is having OH na, so it will have a hydrogen bond ना. सही है. इसमें आईडीआईडी भी होंगी और परमानेंट डायपोल भी होगा, बट द मेजर फोर्स द और द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है वही हमको मेंशन करते हैं. बट द स्ट्रॉन्गर फोर्स इन इथेनॉल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. Ethene is having high DID forces, and it, ethanol is forming hydrogen bonding na. So that is the reason ethene is having a very lower boiling point while ethanol is having a very higher boiling point. Okay. Ethene only has IDID force, while ethanol has IDID force, PDPD force, and hydrogen bonding. So it will need वही हम लिख देंगे, it will need a lot of energy to overcome forces in ethanol than in ethene. सही. वही जो हम वो लिखते हुए आ रहे हैं. सही. इस तरीके से करना है. अच्छा देखो, this question is about the solubility now. This question is about the solubility of some alcohols. The table shows that the solubility in water of the first 6 alcohols in a homologous series. अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि भाई solubility जो है, methanol, ethanol, propanol, they all are soluble now. But butanol, and if you are going from butanol to hexanol, the solubility is decreasing now. So why the solubility is decreasing? Why? Explain why the methanol and water are soluble in all proportions. You must include a diagram in your answer. ठीक है. आपने ये प्रूफ करना है कि ये क्यों है. देखो देखो ये रीजन क्या है. देखो सबसे पहले रीजन क्या है. मिथेनॉल क्या करता है.
ये बुलेट से आपका मिथनॉल है ना, पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। लेट से ये आपका H2O है, ठीक है, और ये आपका मिथनॉल है, ठीक है, और ये एक और H2O हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये इथेनॉल है, सॉरी, और ये हमने एक और H2O ड्रॉ कर लिया, सही। अभी हमने दो H2O को दिखा दिया, देखो अब होगा क्या। मिथेनॉल जो है ना वो H2O से हाइड्रोजन को बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, ठीक है। मिथेनॉल क्या करेगा, H2O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। ये यहाँ से जो इसको इसके साथ करेगा, और ये जो इसका H है ना, ये इस H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसमें वो सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये लिखना कैसे, मिथेनॉल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H2O, ठीक है। वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कर रहा है फॉर्म ना, एट सही एक्सप्लेन कर दिया, अगले उसमें इसको थोड़ा ये और एक्सप्लेन कर दो। एट लीस्ट वन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द वाटर एंड इथेनॉल, सो दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल, ठीक है। एट लीस्ट वन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया इस तरीके से बस। So, sir, if hydrogen bond is formed and it's soluble. यस, this is a question about the hydrocarbons. Explain why 2,2-dimethyl propane has a much lower boiling temperature than its isomer pentane. Detailed description of the forces are not required. Basically, branch chain are lower in boiling point than the stator chain ना, जो लोअर होते हैं उनका जो स्टेटर चेन में वो क्या बोलते हैं, जो स्टेट जो वो होती हैं ब्रांच चेन होती हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है, उनकी फोर्सेस वो कम होती है। वो रीज़न क्या होता है उनका, They have रीज़न ये less होता points है of कि contact. उनके, हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं उनमें वो कम होते हैं ब्रांच चेन में, लेकिन उनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, तो इस तरीके से 2,2-डाइमिथाइल ना, तो इसमें कांटेक्ट पॉइंट्स तो बहुत ही कम हो जाएंगे। जो ये वाला कार्बन है, द टर्मिनल कार्बन विल हैव नो कांटेक्ट पॉइंट्स ना, क्योंकि सारे उसको जो CH3 उन्होंने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये वाले CH3 ने किया हुआ है सराउंड, यहाँ से ये वाला CH3, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से ये, तो चारों तरफ से इसको क्या सराउंड किया हुआ है बाय डिफरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये प्रोपीन को देखूँ, प्रोपेन में सबके पास स्पेस होगी टू फॉर्म इंड्यूस फॉर डायपोल, ठीक है। अभी हम मर्जी से इंड्यूस डायपोल फॉर्म कर सकते हैं, कहीं से कुछ नहीं है टुगेदर किया हुआ, ठीक है। इनके पास ये कांटेक्ट पॉइंट, ये भी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बहुत ज्यादा कांटेक्ट पॉइंट्स होंगे इनके पास, ठीक है। Okay, sir. ब्रांच चेन हैज लोअर इंड्यूस्ड डायपोल देन स्ट्रेट चेन because branch chain is having less contact point, or we can say that less surface area ना, और less surface area, ठीक है। this question is about this question is about some halogens and their compounds. The intermolecular attraction between the halogen molecules are London forces.
that are ideative forces now. Describe how London forces form between the halogen molecules. Basically you have to define the origin ना. ठीक है, आपने origin को define करना है. ठीक है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आपने इसको बस जो है ना ये ओरिजिन करना है डिफाइन, और किस तरह से करना है इसको अभी हम देखते हैं. ठीक है, आपने जस्ट उसका ओरिजिन भी डिफाइन करना है. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, इसके अच्छा देखो, इसमें जो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर. ठीक है. बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई ये पॉजिटिव या कोई चार्ज आता है, तो जैसे मेरे पास फर्स्ट करो क्लोरीन है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं. ठीक है. पहले पूरे शेल में टुगेदर थे. ठीक है, यानी कि अलग अलग थे, डिस्ट्रीब्यूट हुए थे. अब क्या होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज या कोई भी ये पॉजिटिविटी आती है ना यहाँ पे, तो सारे इसकी वो तरफ क्या हो जाते हैं, ये मूव कर जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. ठीक है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर ड्यू टू द अपकमिंग positive charge results in forming IDID induced dipole. Instantaneous वही uh, induced dipole. ठीक है. इसकी वजह से induced dipole बन जाते हैं ना. इसके ऊपर induced dipole partial नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है. ये for one, for 2 marks, and for third mark wait a minute. ये मैंने सीधा इसका आंसर ही तो लिख दिया. ठीक है. क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. अच्छा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ इंस्टेंट या टेम्परेरी टैपोल्स वो क्रिएट हो रहे हैं ना. जैसे ये एक और ये क्लोरीन है. ठीक है. तो दोनों में कुछ ना कुछ टैपोल वो क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है. सो पार्शियल पॉजिटिव सो पार्शियल पॉजिटिव टैपोल अपीयर ऑन वन मॉलिक्यूल एंड partial negative dipole appear on second molecule or another molecule. इस तरीके से आपने आना है. ठीक है. तो ये आपने 3 पॉइंट के लिए डिफाइन करना है इसको. सही. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट. The boiling temperatures of the chlorine and bromine are shown in the table. Explain why the bromine is having a higher boiling temperature than chlorine. वही है, एक ही चीज चल रही है ना, कि क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. सो क्लोरीन ब्रोमीन विल हैव अ higher or more induced dipole. Bromine is having greater number of electrons, so it will have greater induced dipole. सही है. ये आपने इस तरीके से करना है.